Mantri ji, Namaskar. So, Honorable Minister of Heavy Industries, Government of India, Dr. Mahendranath Pandey, esteemed industry colleagues, Namaskar. On behalf of ASSOCHAM's Manufacturing Council, I extend a warm welcome and sincerely thank you all for joining this important session on smart manufacturing and Industry 4.0. We are in the midst of very challenging times with unprecedented impact due to COVID-19. It has clearly exposed the uncertainties across all aspects of business value chain, such as fragile customer demand, plant stoppages, logistics disruption, and scarcity of skilled resources. However, the quick bounce back post the second wave of COVID-19 offers optimism for strong recovery and sustained economic development. In this context, the role and contribution of manufacturing sector cannot be overemphasized. It remains a key growth driver, especially for the developing economies. The global manufacturing paradigm has undergone a structural shift with clear focus on sustainable and smart production. The rapid adoption of digital transformation tools will not only equip industry to navigate through the current crisis, but also make businesses future-proof. Industry 4.0 has ushered in a new age of innovation that has fundamentally changed the way businesses operate. Technologies such as artificial intelligence, machine learning, advanced robotics, blockchain, big data analytics, 3D printing, etc., have significantly transformed the global manufacturing landscape. And this is clearly evident in advanced economies like Germany, Japan, the USA, and Singapore, embracing Industry 4.0 to enhance their manufacturing competitiveness through higher productivity, cost efficiencies, and world-class quality. Although India lags behind its global peers in Industry 4.0 adoption, there is immense potential for us to transform into a smart manufacturing hub. The large manufacturing base offers a unique opportunity to progressively harness the full potential of Industry 4.0. This will be a key factor in positioning India as a major player in the global value chain. The need is to prepare a comprehensive Industry 4.0 roadmap and ensure implementation in a time-bound manner. Micro, small, and medium enterprises play a pivotal role in India's economic development by driving employment, exports, and inclusive growth opportunities. Given their strategic role, it is important to have MSME sector at the core of Industry 4.0 framework to maximize economic gains. Despite the major benefits of Industry 4.0, adoption is limited due to restricted access to technology, high investment, and lack of infrastructure, and also inadequate cybersecurity norms. Therefore, the role of government as enabler, as a facilitator, and policymaker can provide the necessary impetus. It can provide significant push through policy interventions such as targeted subsidies, tax breaks, higher budget allocation, and creation of robust telecommunication infrastructure. A key focus area must be to strengthen the technical competence of the workforce. At present, we also struggle with limited vocational training capacity and inferior quality of technicians, engineers. In such a scenario, the industry, academia, and government must collaborate to develop robust training infrastructure and rework the curriculum to make it more industry-oriented. This will ensure an upskilling of existing workforce and also create a strong pipeline of professional talent to fast-pace Industry 4.0 penetration. Government of India's Make in India initiative, coupled with focus on formulating advanced manufacturing policy, will play a decisive role in augmenting manufacturing sector share in GDP to 25%, an ambitious target set as part of a national manufacturing policy. Ministry of Heavy Industries has taken a commendable initiative, Samarth Udyog Bharat 4.0, which stands for Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hubs, with a clear vision to facilitate and create ecosystem for propagation of Industry 4.0,
set of technologies in every Indian manufacturing units by 2025. The World Economic Forum has collaborated with Indian government to set up Center for the Fourth Industrial Revolution in India to co-design new policy frameworks and protocols for emerging technologies. Niti Aayog acts as the nodal agency for coordinating the partnership. This clearly signifies the importance of India in shaping the global narrative on Industry 4.0. To conclude, the successful transition to Industry 4.0 will require a concerted, broad-based, multi-stakeholder effort. Let us all contribute our bit to realize our nation's true manufacturing potential by embarking on a digital transformation journey. Thank you, and I look forward to an insightful session. Now I invite my colleague, Mr. Chirag Bejal, Managing Director, Carrier, and he also serves as co-chair Manufacturing Council, to share his thoughts. Over to you, Chirag. Thank you, Vinod. Namaskar, and Honorable Minister, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Sir Dr. Mahendranath Pandey. Thank you for being with us today. My colleagues at ASSOCHAM and the industry distinguished members and the participants who are with us in this live session. This dialogue and the program that we are doing with ASSOCHAM and the other industry members could not have come at a more opportune time. Cushman and Wakefield is a known name in the global building space, and they've just come out with the Global Manufacturing Risk Index, in which India has overtaken the United States for the first time and ranked number 2 just after China. And this is now available on the public domain, which also signifies that what we are talking about today really connects very well with our vision as the Indian economy and the industry. I'm personally glad to be a part of today's session because it's imperative, like I said, manufacturing from where it stands perhaps today close to about 18% contribution in GDP. And if we have to make India the 5 trillion economy that we aspire for it to become in the next 5 years, the manufacturing contribution must go up to as much as about 25%. And this is the global corporation CEOs discussion that we keep having, because a larger part of our role, Sir, and the other members is being the advocates of India to the principal investors who are outside India. The global manufacturing industry, frankly, is at the cusp of a paradigm shift, and it's led by advanced technologies and manufacturing processes. And in the developed nation, many of the manufacturing industry is becoming increasingly digitally aligned from backward integration, which means that we are trying to embed technology within our product and services from the time that it is designed and to the time that we are looking at the life cycle that it will serve the customers and users. If we start looking, and some of these frankly were talked about by Mr. Pandey just a little while back, the Indian manufacturing industry is beginning to explore new advancements in technology, such as the analytics, data analytics, Internet of Things, robotics, 3D printing, and so on and so forth. And it's impacting, this is also to not just grow manufacturing, but to impact the lives of every Indian positively, which is again one of the vision statements our Honorable Prime Minister has shared with us. This merger of the physical manufactured products or physical world and the digital world is really something that is unfolding with us today. It's giving us visibility and control of manufacturing units across the value chain, and yet has opened up many opportunities and challenges that we must keep in front of us. Within India, so the medium and the large companies, as we observe them, have initiated the proof of concepts across multiple domains, including energy, maintenance, data visualization, optimization, and analytics. Now, these developments, many of them are at nascent stages, and there is a lot that is yet to be done. The Indian manufacturing sector, as we observe, sir, is remaining cautiously optimistic, and it's our job at ASSOCHAM and along with the partnership with the government to make them very optimistic about embarking on this journey. Hence, the request that we will have is that we also must start having a dialogue about shifting the focus from not just making it India, but making it smart in India and creating more awareness in the manufacturing sector
Mr. Pandey also spoke about the MSMEs, which I think is a very important segment, which will play a pivotal role in India's manufacturing growth in times to come. And it has potentially it has a potential to dramatically change the manufacturing map the way we see it today. Develop a concept and a strong incentive program, frankly, for the automation across the country. And we have to ensure that this 4.0 and beyond remains less of a threat and more of an opportunity. So the digital manufacturing is going to be the future, and we have to first acknowledge and accept this, the way we see internet and Internet of Things becoming a part of our life every day. And if this is going to be the future of all manufacturing oriented businesses due to increased customer centricity and personalized experiences, then we have to be looking at how do we integrate the plants with the front and the back end of the value chain, creating a more sustainable and reliable supply chain, which makes it visible for us to kind of anticipate risks ahead of time. This is also an opportune time, which I would like to call out again for your interest, sir, for support of the government in creating and the platforms for collaboration and partnerships between the manufacturing and service economy within India. Now, why I say that is if it is focused on IT and IoT, which is a strength that India has, and we have the support of the government to be able to create, this can have a multiplier effect on the incubation and sponsorship for promising developments in digitization, like machine learning, augmented reality, and the IoT, the Internet of Things landscape for the future of manufacturing in India. So thank you again. And with these thoughts, I hand it back over to Mr. Pandey. Thank you so much, Chirag, for your wonderful thoughts. Now I invite Dr. P.K. Banerjee, Chairman, ASSOCHAM Quality and Productivity Council, and President, Chief Technology Officer, Hindalco Industries, to share his thoughts. Over to you, Dr. Banerjee. Thank you very much, and good afternoon to you all. I have a few slides. I'll just share that. Would request you to finish in 5 minutes, Dr. Banerjee, right? Yeah, of course. Thank you so much. So first of all, on behalf of our ASSOCHAM Quality and Productivity Council, I invite and I welcome all the participants who are present today in this virtual platform. And especially, I want to thank our Honorable Minister, Dr. Mahendranath Pandey Sahab, who has spent so much of time with us to encourage to discuss a topic which is so relevant today, smart manufacturing and Industry 4.0. It's very, very relevant and very timely. So thank you, sir, to be present here. Now, when I look back, not too long, maybe a year or year and a half, since then, this digital journey, the digital movement has taken fast forward mode. It's moving so fast. Things are changing so rapidly. What we thought impossible only few months back, we thought that we need to come to a conference room, discuss and take a decision. Today, it is just this virtual platform from different corners of the world. We come together and decide. In a factory, when we see, this is a typical example, in a storeroom, we need a supervisor, we need a worker to manage store items. And today, just a smart robot can handle the entire thing. And that's only a few examples. And there are so many things that are happening in that space. So the question is that, what is leading to this journey? What are the steps? What we need to do? Let me go to my next slides. So if you can see, I'll just use a pointer here. Okay. So if you see, there are basically 3 steps: digitization, digitalizations, and digital transformations. One has to follow these 3 steps one after another. Get all information data in digital form. And then once you have all the data, that data has to go into a intelligence platform where you get the insights, you find what to be done, what action to be done to improve. So that's the second phase, which is critical. You apply artificial intelligence, machine learning, digital twins, all those tools and tackles are used to get insights and take decision for improvement. And finally, it is the digital transformations which transform the business. In a business, there are multiple processes. It may be procurement process, it may be sales and marketing, HR process. There are multiple processes, logistics, supply chain.
all those processes needs to be connected in a single platform to collaborate, to share information, to take a collective decisions. And that's when happens, the business transform. And that is the ultimate objective of this digital journey. And for these transformations, there are 4 areas, the 4 focus areas one has to focus. There's this first one, I talk about the smart, safe, and sustainable operations. But the second area, of course, the supply chain, starting from your raw materials to the inbound logistics, the outbound logistics, the entire supply chain has to be looked into. And of course, the digital savvy workforce, and this is extremely important. We need to have a culture, there's a digital culture to be created in an industry which transform the whole movement. And of course, finally, it is the delighted customers. The ultimate objective is the customers. They needs to be delighted. And this digital technologies has to keep focus on all those 4 corners. So let me share a few case studies. Quickly, I'll share some of the case studies which talks about the applications. When we talk about operations, safety is extremely important. And it is the digital technology like AI-based computer vision platform can help immensely on that. CCTV camera captures a lot of information from the shop floor, and then the intelligence system, the artificial intelligence, analyze those data to find where are the violations on the shop floor. It could be PPE violations, it could be COVID protocols, it could be vehicle movement, or even the quality compliance. Those kind of deviations can quickly be alerted to the people either by text or by voice, and necessary actions taken. It gives a lot of benefit to the operations. Another example is connecting plants. For example, at Hindalco, we have multiple plants on the downstreams, different locations. They do rolling, hot rolling, cold rolling, extrusions and all. They needs to be connected in a single platform, and they exchange real-time informations. What going wrong, what action one can take based on others' inputs, and that eventually help optimizing each of the plants. For example, one plant could reduce their turnaround time, whereas the other can improve their process efficiency by fuel oil consumptions, reduction in the oil consumptions, like that. Similarly, quality I talked about is another good example, how to get the right quality or the consistency in the quality. Again, by advanced analytics, one can achieve that. This is in one of our plant, rolling plant at Taloja. We are achieving a very high level of accuracy on the quality front. Another interesting example is the smelters. Digital twin. Digital twin actually, simulate the entire process and help the operations what actions should be taken. Smelter where we produce aluminum hot metal from alumina. These digital twins are helping immediate actions, what corrective actions they need to take to improve the current efficiency, and this has resulted significant benefit to the organizations. And of course, the asset, this is the assets where it needs to be available when you need. Again, predictive maintenance can tell us the health of equipment. Is it going to fail tomorrow, or it can still run for some more time? So you can optimize actually. If it is going to fail immediately, you have to take it for shutdowns, and if it is having quite a good amount of life, you continue. So that's the way you optimize your productivity. Now, finally, there are many such case studies. Because of paucity of time, I will not go through all those, but let me summarize what are our key learning from this digital journey so far. We are still learning on that, and these are 10 commandments, 10 key learnings. I already spoke about digitization and digitalization difference. But the second point is extremely important. You may have a very aspirational target, a very big plan, but then you start with small. Keep small objective, benefits clarity, and implement and get the confidence of your employees, and then scale up. And that's the process has to be followed. The point number 3, 4, 5, that learning's best mainly on the data. I think data is the core of the whole data analytics and digital journey. Data has to be well defined. It should be easily accessible, and data means different for different applications to different people at different levels. So that clarity has to be there. And when it comes to the real-time data, there will be a lot of surprise coming from the data, and you must be prepared for that. When we do the averaging, that's gone. But on real-time basis, there are a lot of insights comes which surprises us.
And of course, this is the topic already talked about, the ecosystems. We need a partnership, and we need different people coming together, sharing their knowledge. It's not single person. And especially if you see the point number 7, when we talk about the domain and data, it's very, very important. The domain specialist is needed in manufacturing industries. People may feel, I have data, and by data analytics I'll solve problem. That's not going to happen. So data scientists and domain specialists, they need to work together very, very, very closely, collaboratively, so that that problem can be solved. And of course, this is also spoken, the reskilling. We have to train our people, not that advanced analytics in fast go. Start with simple analytics, simple statistical tools, and that's the way they will keep learning and the culture to be developed. And of course, the IT system, the policies to be revisited, and these are the supports is necessary if we really want to launch on a digital journey. And finally, the data maturity. It's not that one time I got data and that's done. You need to revisit every year. So that's all from my side. Thank you very much for giving me this opportunity of sharing my thoughts on this. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Banerjee, for packing so much of technical information, in 5-7 minutes. Thank you so much. I now call upon Mr. Kulbeen Sehra, Chairman, Punjab State Development Council, and Executive Director, GNA Axle, to give his address. Over to you, Mr. Sehra. Thank you, Mr. Vinod Pandey, and good afternoon to everyone in the panel. So, like Mr. Vinod Pandey and Mr. Baijalji has focused more on the policies and the government initiative required, and Dr. Banerjee has focused more on the technical processes of digitization. So I would like to give some insight into the advantages of the digitization, automation, Internet of Things, and even additive manufacturing. So to start with, automation and basic manual labor can work together. Like we have this phobia that automation, if it comes, then where will the manual labor go? For example, in critical processes like accept, reject, or dangerous processes like there is a chance of more risk to human interference can be automated. And you can basically time the line, and the production lines can be timed with the help of automation, and you can get more productivity with the robots and gantries in the manufacturing processes. So then besides that, with the Internet of Things, real-time production can be tracked, and real-time health of machinery you can track, and likewise you can plug the holes wherever the time delay is more or some abrupt fast manufacturing is there, you know, those can be tracked. Then remote diagnostics can be done. Suppose your machinery is from Europe or Japan or any other country or anywhere from India. The travel cost of the technicians and their team is saved. The diagnostic of the machine can be done through the internet. They can see what's the problem and they can teach you this has to be done. Then remote commissioning can be done. You have got new machinery, especially in the last year, and even now. If you are got machinery from overseas or anything, and you are worried that how will the team come, and there are travel restrictions. So I'll give you our own example. In GNA Axles, we commissioned almost four forging press lines, fully automated, and all through remote commissioning. So this is a good example, and this should be like the norm in the future as well for the whole industries. And besides that, I would like to throw some light on the additive manufacturing, that is 3D printing. In that, government can support by making some tech centers where they can provide their facility at subsidized prices, so that before mass production for like MSMEs or such small industries or medium scale industries, they can go through the additive manufacturing processes, so that they don't have to make the tool cost of any new product can be reduced, so that and with additive manufacturing, and the improvements can be done in the product design before it is being mass produced. So some tech centers with 3D printers, if the government can provide with subsidized prices on their workings. And besides that,
that can help in some tool manufacturing as well, where the limitations of machining is there for the tools to give a better yield. These are the advantages of the digitization, Internet of Things, and Industry 4.0 and automation in this manufacturing. And besides that, from the government aspect, the Department of Heavy Industry with its smart advanced manufacturing and rapid transformation hub called the Samarth Udyog Bharat 4.0 initiatives further act as drivers of Industry 4.0. So, government initiatives to popularize and demonstrate practical Industry 4.0 solutions. These initiatives are helping business recognize the importance of digital capabilities and technologies such as Internet of Things, artificial intelligence to expand competence in the manufacturing sector. And for example, now even companies such as General Electric and Bosch have marched ahead with the smart manufacturing in most of their Indian centers. GE invested over 200 million US dollars in a flexible advanced manufacturing plant to produce diverse products from jet engine parts to locomotive components. And Bosch has invested around 31 million euros to expand their smart factory further. This is good news for India, and we should look forward for smart manufacturing in India. And that is the way forward for consistent and more productive manufacturing. So that's all from me right now. So thank you, everyone. Thank you so much, Mr. Kulveen. Now I invite Nishant Arya. Mr. Nishant Arya is the Vice Chairman, JBM Group. Over to you, Mr. Arya. Yeah, thank you, Mr. Pandey. Very good afternoon to Honorable Minister Dr. Pandey. So, as we see today that the role of Industry 4.0 and AI and machine learning and IoT in our day-to-day manufacturing is enhancing very extensively. And without this, the companies actually would not be focusing and really being able to gather global market share. And I would like to focus on one point actually which drives each of these things, which is competitiveness. So competitiveness is the basic underlying factor which drives the decisions by any organization to really go for such kind of solutions, which ensures 100% tracking, 100% traceability, and at the same time, first time right and every time right solutions. At the other end, we see that we are able to remove human error and we are able to train the system in a manner that it is having the highest level of accuracy. Then we clearly see that any customer and any end consumer who's looking forward to products today is looking for world-class products, and there's no differentiation of any kind. And this is what would propel and ensure that India comes onto the global map of manufacturing. So your industry today, the Ministry of Heavy Industry today, is driving a very important program for the country, which is focusing on sustainability, which is FAME 2. And in FAME 2, when we talk about things like electric vehicles, we clearly see that electric vehicles are the need of the hour. And if we deploy such kind of solutions with 3D printing, with additive manufacturing, IoT, how we are able to reduce the time to market, how we are able to produce first time right vehicles is going to be inevitable, and making India the global manufacturing hub for such kind of technologies. As we saw earlier on, that the industry, manufacturing industry, is having a large role from the automotive sector. So today, about 50% of the manufacturing GDP in our country comes from the automotive sector, which is about 7.5% in a normal year, right? And if India has to go to $1 trillion, which our Honorable Prime Minister has guided each one of us for the manufacturing sector, so there multiple sectors, including the automotive and the EV sectors, would be the front runners and torch bearers to really get to that target. So I would like to draw your attention, sir, clearly that how we can clearly propel and bring that kind of focus for companies to look at these things. Because if you would have seen 10 years back, it was something special which a company was doing, which was differentiating a company from any other organization. But today it's hygiene, and it is a basic requirement for an organization to deploy such systems. Like we as an organization every year for such kind of technology adoption set aside a technology investment into our business to remain relevant and to have cutting edge technology.
So I think that is the kind of focus which is required in this domain, and clearly the companies which earlier on who were investing into technology development themselves or investing into technology products were getting incentivized by Ministry of Science and Technology in a big way, and the companies were investing into this area. So I would just like to bring about this point as well, that in this new era of technology, when we look at whether product technology, process technology, as well as the holistic technology, how can different organizations who are focusing on these areas be incentivized? Because clearly Make in India is very important, and that is a thrust for us. But along with Make in India, if we can look at Create in India and creating these technologies in India, I think that would be the ecosystem we would want to develop, and that is what would be the game changer for us today. And our country is a global powerhouse for the software technologies for the world. And this exactly is the point where the rubber hits the road, where on manufacturing on one side and software on the other side, if we are combining these two know-hows together, that is what would ensure that India is the place to be when we talk about Industry 4.0 or any kind of smart manufacturing solutions. In case of smart manufacturing solutions, we do not say that we make everything high tech. We simplify what is high tech, and we really ensure that it goes for faster adoption and adoption by any and every organization across different segments. Whether we talk about larger corporates or MSMEs, I think the whole ecosystem needs to work in that manner for us to deliver the goods. And clearly, I mentioned about the automotive sector, EV segment, and many other areas like what we are seeing in the PLI scheme also, that so many different sectors have been identified. It is very meaningful and a holistic view which every sector has to take. And today we are able to see that in this scenario, if we are able to integrate the skill development part, I think, which is not seen in a very integrated manner today with the AI, machine learning, and Industry 4.0, it will give phenomenal results. Because learning, unlearning, and relearning for different sectors, if it can be done well, on one side today we have dearth of good people who are able to take up such kind of roles, and on the other side we have unemployment in certain areas. So I think bridging this gap is what would be a turning point and would act as a real catalyst in this particular case to really give a thrust for the involvement in this area by different sectors. And we can create common centers, like, sir, in your ministry has done a fantastic job in case of tool rooms and many other areas where they have been, common facilities have been set up. So if common centers can be set up where MSME specifically can come, and different corporates and larger companies can come and together work with them, and they would then get the benefit, because many smaller companies cannot do this on their own, and that would give them a right platform to have collaborative working and cohesive working. So that is my perspective clearly in this case. And if we could integrate this smart manufacturing with your key schemes in the ministry, whether with FAME or with the other policies, I think the clear identification of companies who would want to deploy these solutions would really get a clear roadmap how it can be done, and it is clearly linked to your other policies which are extremely important for you. So in that scenario, what will exactly happen is that the different opportunities which an organization may take, the end goal is common for them to really work towards it. So I think that would be very important, sir. And clearly, the Ministry of Skill Development can also be a really big game changer where it can work collaboratively with you. And as we understand uh, from the Honorable Minister Pradhan, that he is really clear that this is the way to move forward, and in many other areas, it's already happening, sir. So thank you for your time today, and really looking forward to this, and really understanding that how all the different organizations in the ecosystem can participate and ensure that your vision becomes a reality. Thank you. Thank you so much, Mr. Arya. I now request Mr. Vineet Agarwal, President ASSOCHAM, to share his thoughts. Thank you, Vinod ji. Dr. Mahendranath Pandey ji, Honorable Minister for Heavy Industries, Government of India, Sadar Pranam. Thank you so much for joining us today. Eminent speakers and participants, it's my pleasure to be at this session today on Smart Manufacturing and Industry 4.0 as part of our ongoing summit on global value chains. For any country to move up the value chain requires massive changes in not just our resolve but also in our approach. हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी फोकस करना पड़ेगा, जिसमें
लैंड, लेबर, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और कैपिटल, ये सब हमें कंपेरेटिव बना सकता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में. This will drive our journey towards greater value creation, hence accelerate our journey towards a $5 trillion economy. COVID-19 pandemic has presented a very unique opportunity for India to attract global manufacturing companies who want to diversify their supply chains. For India to emerge as a new manufacturing hub to the world, it cannot focus only on sectors where other countries have a strong manufacturing capability. Instead, India should complement that approach with a focus on manufacturing goods for the future. To support the industry amongst this COVID period, government ने बहुत सारी नई नीतियां निकाली हैं और आत्मनिर्भर पैकेज भी निकाला है. इसमें आपका कमर्शियल माइनिंग को खोलने के लिए, स्पेस सेक्टर को खोलने के लिए फार्म बिल्स लाए हैं और जो एफडीआई लिमिट्स है वो कई सेक्टर्स में जैसे डिफेंस, इंश्योरेंस में बढ़ाया गया भी है. स्केल कमेटी के द्वारा और जो पीएलआई स्कीम है, इससे 24 चैंपियन सेक्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे एग्रो फूड प्रोसेसिंग, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर एटसेट्रा में एक्सपोर्ट पोटेंशियल साथ साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी, ये सब इसमें शामिल है. With these initiatives, the government has laid down a path that can only succeed once manufacturers themselves take a holistic approach on how they should manage their value chain and be competitive. Some of the important steps towards achieving this goal would be to adopt technology and digitization, moving towards Industry 4.0. जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं और इंडस्ट्री 4.0 के बारे में सोचते हैं, उसमें रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, end-to-end value chain connectivity, remote working and cloud-based collaboration, और साथ में जैसे कई लोगों ने बताया 3D प्रिंटिंग, जिसमें बहुत एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ये ऑलरेडी एक बहुत ड्रामेटिक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है टू इंडस्ट्री. स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये भी है कि हमारे जो सप्लाई चेन है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है और उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. इस बार अब जैसे हमने देखा है कि लॉजिस्टिक्स काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ पैंडेमिक में, और कंपनीज पहले जो जस्ट इन टाइम होती थी वो जस्ट इन केस पे मूव हो गई है. अभी बहुत ज़रूरत है कि सप्लायर्स के हम नेक्स्ट लेवल तक टियर 1, टियर 2, टियर 3 कि उनका क्या स्टेटस है और वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पैंडेमिक में, ये सप्लाई चेन हमें वहाँ तक मॉनिटर करना पड़ेगा. तो सप्लाई चेन्स आर गेटिंग डीपर एंड इवन डोमेस्टिक and less global to withstand these shocks. A smart manufacturing can also accelerate formalization of Indian manufacturing, where many MSMEs can adopt technology not to be just productive and competitive, but नए markets में भी पहुंच सकते हैं. They would of course need support from the government to adopt digitization and move up the value chain. इससे कुछ फंड्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये ट्रांजिशन करने के लिए मिल सके, ताकि वो ट्रेनिंग और स्किलिंग में भी जुड़ जाए, ताकि ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अडॉप्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट का ये समर्थ प्रोग्राम हैज बीन एक्सीलेंट एंड इट इज देयर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स एंड कस्टमर्स. But most of these 5 centers, the common engineering facility centers, are in academic institutions. It is now time, अगर हम ये centers को institutions के अलावा PPP मोड में कंपनीज के साथ या एसोसिएशंस के साथ जोड़ दे, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स और क्रिएट हो सकते हैं. और ये सेंटर्स के अलावा कई स्टडी टूर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं एसोसिएशन के थ्रू. एमएसएमईज को ले जाया जा सकता है इन सेंटर्स में, उनको बताया जा सकता है कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल है और कहाँ कहाँ हम ये एस्पेक्ट्स को इस पर्टिकुलर सेक्टर से हम इसको जोड़ सकते हैं. जैसे कि हमने देखा है कि अभी के इस दौरान में, पैंडेमिक में स्पेशली, जो इम्पैक्ट पड़ा है एमएसएमई सेक्टर को वो बहुत भारी है.
और उनके लिए अगर हम ये चीज़ उनके ये सेंटर्स ले जाए जाए उनको, तो इनका बहुत लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो सकता है। हमें एक और चीज़ देखना चाहिए कि इन समर्थ सेंटर्स से क्या बहुत सारे पेटेंट्स निकल सकते हैं क्या, और एक गोल रखना चाहिए कि कम से कम 100 से ज़्यादा पेटेंट हर साल निकले समर्थ प्रोग्राम से। As India seeks to become a self-reliant $5 trillion Atmanirbhar economy, the focus on manufacturing will help India in leveraging its demographic dividend, enhance employability, and reduce the burden on the agricultural sector. But we have to balance this technology versus our country's massive labor force by investing into high technology centers as well as development of labor-intensive sectors. I thank you all for joining us today for this very important program. I would also express my sincere gratitude to the Honorable Minister for sparing his time. Thank you. Thank you so much, Vinitji, for your excellent thoughts. Now it's my pleasure and privilege to invite the Honorable Minister, आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, to address us और अपने विचार साझा करने के लिए। मंत्री जी, over to you, sir. धन्यवाद विनोद पांडे जी। आज ग्लोबल वैल्यू चेन की वर्चुअल मीट के सेकेंड डे सेशन फर्स्ट में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री 4.0 डिलीवरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इस एस्पेक्ट की इस वर्चुअल मीट में आप सब जो जुड़े हुए हैं, सम्मानित श्री विनीत अग्रवाल जी, अध्यक्ष एसोचैम, श्री दीपक सूद जी, महासचिव एसोचैम, तथा जिन लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया, आप मॉडरेट भी कर रहे हैं अपने रिमार्क के साथ, मिस्टर विनोद पांडे जी, चिराग बैजल और डॉक्टर पी.के. बनर्जी, मिस्टर कुलविन सिया एंड मिस्टर निशांत आर्या, आप सभी के प्रति और जो भी वर्चुअली जुड़े हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत सम्मान है, मेरी तरफ से सबको शुभेच्छा है। मैं आप सबको ध्यान से सुन रहा था और आपने बड़े अच्छे, बड़े गंभीर विषय पर, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आयोजित की। आप सबको अच्छी तरह मालूम है, भारत पहले भी अच्छी पहले हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जमाने में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दुनिया में बहुत तेजी से उभर रहा है। हाल में उस्मान एंड ब्रेकफील्ड 2021 की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका से आगे दूसरा सबसे बड़ा प्रचलित मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निसंदेह हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है, आत्मनिर्भर भारत की पहल, बिजनेस रूल्स का सरलीकरण, ये सब चीजें, बहुत से गैर जरूरी कानूनों को खत्म करना, कारपोरेट के फीडबैक के आधार पर बिजनेस फ्रेंडली नीतियों को बनाना, आप इसको फील कर रहे हो। आपके संस्था एसोचैम से खुद पीएम सीधे जुड़ करके भी आप लोगों से काफी संवाद उन्होंने किया और आपके अनुभवों का, आपकी जानकारियों को उन्होंने यूटिलाइज किया है। आगे भी उन सब चीजों को फोकस करते रहते हैं और वो आपको भी उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर एक एनर्जाइज करने का कई बार पहले की, जिसे मैं जुड़ा रहा। मेरे लिए एक बड़ा सुखद संयोग है कि मैं आप में से कई लोग, एसोचैम के जिम्मेवार लोग मेरे से जुड़े रहे। मैं जब स्किल इंडिया एंड एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के काम को देख रहा था, आज फिर से बड़े अच्छे हाथों में वो भी काम प्रधान जी का, मैंने वो लेख कर रहे थे मिस्टर आर्या, वो मेरा भी कुछ संयोग है, प्रधान जी से मैंने वो चार्ज लिया था, फिर प्रधान जी को चार्ज दिया और मैं इंडस्ट्री के काम में माननीय मोदी जी ने मुझे लगाया। तो हम सब आप उस दौर भी जुड़े रहे। तो जब मेरे को खबर मिली कि आप लोग मुझे चाहते हैं इस विषय में, तो मैंने एसोचैम के नाम पर खुशी से अपना समय दिया कि आपसे थोड़ा, आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की यहाँ कैबिनेट थोड़ा लंबी चली, तो इस नाते आपको 10-15 मिनट का
वेट करना पड़ा। कोविड परिस्थितियों के बाद भारत तेजी से उभर रहा है और मोदी जी ने इसको कोविड की कठिनाइयों के समाधान के साथ इसको एक अवसर के रूप में भी एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आए बदलाव में भारत की क्वालिटी और उसकी योग्यता पर भरोसा करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने आत्मविश्वास से लोग आगे बढ़े। इस दृष्टि से आज बदलते टेक्नोलॉजी में युग में मैन्युफैक्चरिंग को कम कीमत तथा कम समय में अधिक उत्पादन के अनुरूप बनाना ये पीएम का विजन है। आप उस दिशा में काम कर भी रहे। इंडस्ट्री 4.0 के समय में जहां नई टेक्नोलॉजी, नए रोबोटिक्स, जिसकी अभी आप प्रीवियस जितने भी जिनके भी लेक्चर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपने रिमार्क्स दिया, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग आदि नई तकनीक, इन सब पर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में गुणवत्ता बढ़ेगी। आप सबने फोकस किया, मेरा भी यही मत है। आप सब को आगे बोलने से पहले मैं एक चीज आपके जहन में डालना चाहूंगा। मैं अभी बैठे बैठे आपको सुन रहा था तो मेरे ध्यान में आ रहा था कि भारत के अंदर सभी देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के प्रति मेरे मन में सम्मान के साथ मैं बोल रहा हूँ, सबको आदर देते हुए बोल रहा हूँ। शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना डिटेल जाने का काम मैन्युफैक्चरिंग में और इन सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में गहराई तक जाना, उनके एसोसिएशन से जुड़ना और उनसे फीडबैक लेकर, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इतनी गहराई तक जाने की कोशिश की। आप इसको रियलाइज करते हो। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की नीतियों पर बजट के पूर्व भी आपके फीडबैक का यूटिलाइजेशन करने का काम, ये सब नई नई पहले मोदी जी ने की है और देश को उसका लाभ मिल रहा है। उन्हीं सब दृष्टि से हमारा डिपार्टमेंट जो सीधे उससे जुड़ा हुआ है और उसमें एक इम्पोर्टेंट भूमिका में है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोडक्शन लिंक की इंसेंटिव योजना PLI, पीएम साहब ने 1.5 लाख करोड़ की ये जो योजना बनाई, जिसमें बैटरी सेल के उस कंपोनेंट पर एक बड़ा बजट, जिस पर सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। ऑटो सेक्टर के एक बड़े कंपोनेंट पर काम हो रहा है, वो विचाराधीन है, लेकिन एक तरह से PLI में 50% पीएम साहब ने हमारे हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को इस काम में सहभागिता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। तो ये चीजें हम सब ये जो मैन्युफैक्चरिंग के जिस विषय पर ये लोकल जो वैल्यू ऐड करने का काम है, निर्यात के बढ़ावा देने का काम है, और मैन्युफैक्चरिंग के तमाम सब सेक्टर्स की जो पहचान की गई है, जहां पर हम अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का उपयोग कर दुनिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत के अपने स्लोगन, अपने विजन को सफल कर सकते हैं। और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत विद इन इंडिया ही नहीं है। मोदी जी का विजन, मोदी जी भारत की पॉपुलेशन, भारत की श्रम शक्ति, भारत के मैन पावर का और आप सब इंडस्ट्री फ्रेंड्स का सदुपयोग करके भारत को इस रूप में लाना चाहते हैं कि भारत अपनी जरूरतों को तो आत्मनिर्भर हो ही, बेहतर क्वालिटी के साथ वो दुनिया के लिए भी सबसे अग्रणी देश बने। ऐसा आत्मनिर्भर सामर्थ्यवान भारत। अभी समर्थ के पीछे जो विनीत जी अपनी बात कर रहे थे, वो वही विजन है। और मुझे प्रसन्नता हुई मिस्टर PK बनर्जी की बात में। सभी के विचार बड़े अच्छे थे, लेकिन PK बनर्जी की एक बात को जो मैं रेखांकित करूंगा कि जो उन्होंने डिजिटलाइजेशन पर 3 स्टेप एंड 4 पॉइंट्स पर फोकस की, जो उन्होंने बड़ा क्लियर कंसेप्ट अपनी चर्चा में दिया है, मोदी जी उसी दिशा में भारत के शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों को ले जाना चाहते हैं और बहुत हद तक उसमें भारत को सफलता मिली है। और सफलता का पैमाना ये भी है कि अगर ये सफलता न रहती तो आज जो इस सफलता का एक प्रतिफल है कि भारत के एक प्रधानमंत्री एक जमाने में कहा करते थे कि हम 1 रुपये हिंदुस्तान के दिल्ली से भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचता है। ये जो 85% ये जो
गलत दिशाओं में जाता था, करप्शन की भेंट चढ़ता था, उन्होंने दुख तो व्यक्त किया, समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं की। अभी तो ऑनर में बोल रहा हूँ, लेकिन एक अनुभवी 13-14 साल गुजरात जैसे राज्य को आगे बढ़ा के आने वाला व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है देश की जनता की पुकार पर, देश की जनता के प्यार और समर्थन से, तो कैसे उसका समाधान निकाला। मैं, आप पता नहीं इसको किस रूप में लेंगे, मैं इस बात को, क्योंकि मैं पब्लिक फिगर, पब्लिक वर्कर हूं, इस आपके इंडस्ट्री फील्ड के लोगों को भी बताना चाहूंगा कि आज कोविड पीरियड में गवर्नमेंट की हेल्प आज उस डिजिटल सेफ में, और गवर्नमेंट की उस डिजिटल सेफ के आधार पर डीबीटी स्कीम से जिस तरह पब्लिक को इस कोविड पीरियड में भी और वस्तुओं की सप्लाई चेन में जिस तरह डिजिटलाइजेशन का लाभ मिला, सब जिसको जरूरत थी उसके खाते में गया, और एक भी आदमी कठिनाइयों में अनाज भी मिला, सहयोग भी मिला, भूखा नहीं मरा। ये अपने आप में भारत में तो इसमें डिजिटल सेटअप की भी बहुत बड़ा योगदान है, जो मोदी सरकार ने लगातार फोकस किया और आगे वो और उस पर बल दे रहे हैं। तो मैंने इस नाते में थोड़ा उत्साहित हुआ आप लोगों की चर्चाओं से, तो मैंने डिजिटल मसले पर थोड़ा 2 शब्द अलग से कहना चाहा। आज आप सबके बीच ग्लोबल वैल्यू चेन में जो आपका मेन आज का विजन है, आपकी चर्चा और पूरा सेशन आपने 4 दिवसीय रखा है, उसमें इसमें सरकार द्वारा विभिन्न फ्रंट्स पर एक कॉम्पिटिटिव जो एफर्ट के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, व्यवसाय से जुड़े कार्यों के लिए सिंगल वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, और इससे प्रोडक्शन को बढ़ाने और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, दोनों दिशों में हमारी सरकार की पहल है। इसमें आप सब बहुत बड़े सहभागी हैं। माध्यम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक मंजूरियों को हमारी सरकार तेजी से कर रही है, जहां प्रगति से समीक्षा करके इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 बरस से रुके चीजों को सरकार हमारी बेहतर तरीके से उसे समय के अंदर ही रुके हुए प्रोजेक्ट्स को, शुरू हुए जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, उसको पूरा कराने की वही माध्यम पोर्टल के माध्यम से व्यावसायिक मंजूरियों को और नियमों के अनुपालन में, तो इस पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय जगत को सिटीजन्स के प्रति बिजनेस रूल और कम्युनिटी बोझ, ये सब चीजों से नागरिकों को हमेशा उनको कम से कम बोझ पड़े। अभी हर बार उन्होंने बल दिया, इस बार भी लाल किले के अपने राष्ट्रीय संबोधन में उन्होंने जो बात कही, आपने भी ध्यान दिया होगा कि हमारी सरकार की नीति है कि नागरिक के जीवन में बहुत कम से कम सरकार का रोल रहे, सोसाइटी खुद अपना रोल प्ले करे। और ये जो विजन है हमारी सरकार का, वो इंडस्ट्री कम्युनिटी को, बिजनेस कम्युनिटी को कितना सपोर्ट करता है, और आप फ्रीली होकर के देश के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, और जब ये आप काम करते हैं तो नेचुरली आप देश के लिए काम करते हैं और भारत को आगे बढ़ाने में आप उसके लिए मददगार होते हैं, जिससे कि आप इसमें आज, और जो इस दृष्टि से जो हमारी आशा है कि जो आप सबके कंट्रीब्यूशन के एक बड़े भरोसे से ही, इसके पहले कोई भी पीएम उसका फर्ज बनता है, लेकिन लोगों ने क्या किया सारा देश जानता है। मैं आदर के संग बिना किसी आलोचना के बोल रहा हूं, लेकिन मोदी जी हमारी सरकार के अगुआ हमेशा 2 स्टेप आगे एक लक्ष्य लेके, एक विजन लेके चलते। दुनिया के कॉम्पिटिटिव फील्ड में भारत की इतनी बड़ी मजबूत स्थिति बनाना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ये देश बने, ये विजन जब चला, उस विजन में जो आप आज चर्चाएं कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट आप सबको सहयोग करके, आपका सहयोग लेके चाहती है, निश्चित तौर से उसके सबसे बड़े प्लेयर आप ही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री में भी जब तक इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी का ग्रोथ और वर्ल्ड के कंपटीशन के दृष्टि से, विश्व प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से आगे नहीं आएगा, तब तक हम उस लक्ष्य को नहीं पाएंगे। उस लक्ष्य के लिए ही मोदी जी दिन रात परिश्रम, दिन रात आप सबके चर्चाओं से, सबकी सहभागिता से देशवासियों के
बाहरी उद्योग मंत्रालय भी विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी के प्रोत्साहन पर काम कर रहा है। कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी विशेष फोकस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दृष्टि से प्रोत्साहन पर हम लोगों ने कई काम किया। भारत के हम लोगों ने कई IITs के संग, कई उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों के संग और उद्योगों के संग समन्वय बना करके टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देते हुए कई ऐसे और उसमें R&D को भी विशेष फोकस देते हुए हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी 4.0 तथा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की रणनीति पर भी सरकार के अप्रोच से हम बहुत अपेक्षा रख रहे हैं। आज हमारी अपेक्षाएं हैं जो आप 15 से 17% GDP के पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं। PM ने मैन्युफैक्चरिंग पर इस कोविड पीरियड में कई वर्चुअल सेमिनार किए, मिनिस्टर्स के ग्रुप बनाए, उसके दृष्टि से पॉलिसीज बनाई। सबके पीछे हमारी आप सबसे अपील है एज ए मिनिस्टर कि उसके पीछे एस्पेक्ट है कि अगर 17%, 15 से 17% GDP में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश के, तो वो बढ़ के आगे आना चाहिए। मैं आज इस चर्चा में आपसे ये एक आप सब जैसे प्रतिभावान लोगों से और ये एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आप पूरी कंट्री के बिजनेस को लीड करते हैं, उसके बड़े सबसे रिकॉग्नाइज, सबसे रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन आप हैं। आप इसे 20 से 25% GDP तक पहुंचाने में सफल हों और निश्चित होंगे, मेरा विश्वास है उस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। हमारा मंत्रालय अभी आप सब पूर्व वक्ताओं ने थोड़ी चर्चा की, मैं उस पर और बल देता हूँ। ऑटोमोटिव सेक्टर में भी बहुत सी पहले कर रहा है और स्वाभाविक ऑटोमोटिव सेक्टर हमारा इस मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारी सोच है कि जिस तरह आज हम ट्रैक्टर्स के फील्ड में नंबर 1 हैं, हम जहां बसेस की फील्ड में नंबर 2 हैं दुनिया में, हम 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स के फील्ड में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। हम कारों की दृष्टि से 4 व्हीलर्स में भी हम दुनिया में 4थे या 5वें स्थान पर हैं। तो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम हर फील्ड में ग्लोबल लीडर बने। इसी तरह से आज जो ग्रीन एनर्जी का युग है, पर्यावरण शुद्धता का युग है, इसमें हमने जो 18,100 करोड़ रुपए की PLI स्कीम के तहत ACC बैटरी प्रोत्साहन, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। और हमारी फेम इंडिया की जो स्कीम फेम 1 के लाभ और उसकी सफलताओं से फेम 2 में जब 10,000 करोड़ की हमने उसमें कंपोनेंट डाला, जहां फेम 1 में 529 करोड़ का था, और 10,000 करोड़ के प्रति जो आकर्षण और अभी हाल में कई और चेंजेस किया गया है, जिससे ये पॉपुलर स्कीम और हाइब्रिड व्हीकल्स के देश में प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर के आज देश की रुचि बढ़ी है और हम उसमें कृत संकल्पित हैं। इन सब में आप सबके सहयोग की बहुत ही जरूरत है और मेरा जुड़ना आपसे आज तो है ही, जब आवश्यकता होगी तब जुड़ेंगे। आपका उत्साहवर्धन करना, आप तक गवर्नमेंट की बातें पहुंचाना और आपकी बातों को गवर्नमेंट के उचित प्लेटफॉर्म तक अपने डिपार्टमेंट, जो कि इससे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हैवी इंडस्ट्री जो है, प्रोडक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड का जो है एक इम्पोर्टेंट की रोल उसका है, उस काम में आपके मूल्यवान सुझावों का सहयोग लेना, ये हम निरंतर ये संवाद की प्रक्रिया जारी रखेंगे। आज की इस चर्चा में मुझे प्रसन्नता है आप सबको सुनने का, आपसे 2 शब्द चर्चा करने का मुझे अवसर मिला। आप सबके सहयोग से मुझे पूरी अपेक्षा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हम उसे साकार करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में और क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हम दुनिया के पायदान पर भारत को श्रेष्ठतम साबित करने, श्रेष्ठतम स्थापित करने में लगेंगे और हमारे अड़ोस पड़ोस की जो अनाप शनाप डंपिंग और केवल बाजारों को पाट देने की पॉलिसी से अलग क्वालिटेटिव प्रोडक्शंस के साथ और अपने अच्छे अप्रोचेस के साथ दुनिया में भारत आगे आएगा। इसमें ग्लोबल लीडर बनाने में एसोचैम और उससे जुड़े लोगों का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। मैं उस रोल के प्रति पूरे भरोसे से आपको इनवाइट भी करता हूं और आपके सहयोग को रिकॉग्नाइज भी करता हूं और आप, हमारी सरकार आपके सुझावों के साथ, माननीय मोदी जी के विजन के साथ आगे बढ़ती रहेगी। हम सब मिलकर के
देश को बहुत आगे ले जाएंगे। इस विश्वास से आज की चर्चा में आप सबको मेरी तरफ से बहुत साधुवाद और बहुत बहुत सादर अभिवादन। और हम सब मिलेंगे, चर्चाएं जारी रहेंगी और आगे नीतियां निर्णयों में उसको प्रभावी रूप से बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और आपका नेतृत्व है और जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की जो कमिटमेंट है, आई थिंक वी आर वेरी श्योर दैट इंडस्ट्री विल बी टेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स टुवर्ड बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। एक बार आपका दोबारा आभार कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम लोगों को संबोधित किया। और हम कोशिश करेंगे कि आपसे बराबर संवाद बनाए रखें। आपको जो भी हमारे पास पॉलिसी के रिलेटेड हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे सजेशंस हैं, वो हम आपसे साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उनको जैसे हो पॉसिबल होता है, यू वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट। सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर जॉइनिंग। Again, special gratitude to Minister for his precious time. And I formally close the session. And I thank everyone also virtually for joining this. Thank you so much and stay safe. Thanks a lot. Thank you, Mantriji. Thanks a lot. Thank you.